evening, students. Today I am going to discuss about 11th chemistry, organic chemistry. Organic chemistry. Now, bonding in organic compounds. Bonding in organic compounds. In organic compounds, how many bonds between carbon atoms? How many bonds are in carbon atoms? The organic compounds are carbon compounds which consist of one or more carbon atoms. Suppose for a carbon compound organic compound which contain carbon atom in which one or more carbon atoms are present in an organic compound. गोटे organic compound रे एक बा एक रो अधिक कार्बन atom थाए. The atomic number of carbon is 4. So 6 carbon atomic number is 6. So the first energy level is 2 and second energy level is 4 electrons. So the outermost electron is 4. In order to attain the stability of an atom, so the outermost electron must be 8. Octet rule. If an atom acquires stability, so the outermost electron 8 due to octet. So here in this case, the outermost electron or valence electron of a carbon, valence electron is 4. So in order to attain stability, so it should require 4 electrons. In order to attain 8 electrons in valence cell matlab K cell 2, L cell 4. L cell is the valence cell or outermost cell in case of carbon. So in case of carbon, the L or outermost cell is 4 electrons. In order to acquire the stability, so the outermost cell must be contain 8 electrons. Then how it can accommodate 8 electrons? If carbon gain 4 electrons, then it will be 2 into 4 per 8. Then it will be stable. If it will gain 4 electrons, or if it lost 4 electrons, then what will happen? 2, 4. If it will lost 4 electrons, then 2 is left. 2 is the duplet rule. The outermost cell contain 2. If it lost 4 electrons. Jodi play carbon 2 4. First cell the data, second cell the 4 carbon. Jodi 4 carbon से 4 electron cell. First cell the data electron, second cell the 4 electron. Jodi 4 electron से नहीं आसे, माने gain करे. ताले इट केतना हिजो 4 ने आसले 8 हिजो ताले ऑक्टेट हिजो ऑक्टेट हेले कोन हिजो कार्बन स्टेबल हिजो then if it lost the 4 electrons, then what number of electrons in carbon atom? 2 electrons will be left in the carbon atom. If 2 electrons will be left in the carbon atoms in the valence cell, then it should octet, means should it duplet, which is stable. And if 4 electrons gain, then outermost will be 4, 8, so that it will be octet stable. And if lost 4 electrons, then its valence electron will be 2, so that it will duplet, so that it will be stable. If outermost cell contain 2 electrons or valence cell contain 8 electrons, they are stable atom. In this case, carbon, if gain 4 electrons, then its configuration will be 2, 8. So outermost will be 8. So it will be stable.
If it lost 4 electron, then here its outermost electron will be 2. So in this case of a duplet, it must also stable. Then it gain or loss, both is impossible for the carbon. If 4 electrons loss, which require more energy, if 4 electrons gain, it also requires high amount of energy, which is not possible, which is not possible in the general or ordinary chemical reaction. So that is why carbon only share alternatively share the electrons with other atoms. But carbon, why carbon does not lose or gain electrons? If carbon loss electrons, then high amount of energy is required to be stable, which is not possible in ordinary reaction. If carbon gain 4 electrons in order to attain stable or octet, then it also requires high amount of energy, which is not possible. यदि कार्बन चारिटा इलेक्ट्रॉन यदि से गेन करे ताले एटा केते हिजो चारटा आसले हिजो 2 8 आठटा इलेक्ट्रॉन हेले से स्टेबल हो स्टेबल हिजो ऑक्टेट हिसाब रे ठीक किंतु ये काहे कि चारिटा जो करि पारुनी गेन ना चारिटा गेन करिया केले ताको हाई अमाउंट रे एनर्जी रिक्वायर्ड हो जो हाई अमाउंट रे एनर्जी रिक्वायर्ड हो काहे कि ना ये इलेक्ट्रॉन अछि so that is why if 2 electrons 2 4 if 4 electrons lost then outermost electron will be 2 which will be duplet also stable but why carbon cannot stable by losing 4 electrons if carbon lost 4 electrons valence electron 2 but it is require more energy to lose 4 electrons to gaining stability so which is not possible in ordinary reaction so only way to carbon react with the other only way carbon react with other atoms by sharing pairing of electrons sharing pairing of electrons so carbon do not form ionic bond if the bond is formed by losing or gaining of electrons so carbon cannot lose or gain electrons so carbon do not form ionic bond if the bond is formed between the sharing pairing of electrons between the atoms then this bond are called covalent bond then carbon covalent bond show kare carbon do not form ionic bond as it carbon does not form ionic bond as it does not lose or gain electrons carbon gain के लॉस इलेक्ट्रॉन करि पारे नै जदि करूछि तर हाई अमाउंट एनर्जी द करूछि व्हिच इज नॉट पॉसिबल सो दैट कार्बन डज नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड तर कार्बन कोन कर परबो ना कार्बन फॉर्म्स only covalent bonds as it shares its electrons with other atoms. Carbon can share its valence electron with other atoms. So this form is called covalent. The bond is formed by the sharing pairing of electron is called covalent bond. If the bond is formed by loss or gain of electrons, it's called ionic bond. Clear in the plane? Then we will see how carbon forms covalent bond with other atoms. Clear?
carbon forms the in all organic molecules carbon atom is tetravalent. Carbon is tetravalent. Tetravalent means 4 electrons in valency cell. Valency cell मतलब outer most cell रे चारिटा electron अछि. 4 electrons in valency cell. So that is why carbon is tetravalent. तमने कार्बन रो चारिटा valency electron अछि. से चारिटा valency electron से केवल other atom सहित शेयर पेयर करि पारे. गोटे एग्जांपल देखिबा. Suppose its valency देखो carbon is tetravalency means its valency is 4 माने valency is 4 माने तर valency share रे चारटा इलेक्ट्रॉन one carbon atom can share 4 electrons with suppose univalent or monovalent. Univalent element है hydrogen. ये hydrogen रो चारिटा atom सहित univalent माने यार valence होची 1 hydrogen ये ला univalent element hydrogen यार चारिटा atom सहित कारण हाइड्रोजन रो चारिटा एटम सहित कार्बन कोन करबे ना गोटे कार्बन एटम तार इलेक्ट्रॉन गुडी को शेयर करबो बुझले बोले तले गोटे one carbon atom share its electrons share its 4 atoms of univalent element એટલે गोटे univalent element रो चारिटा एटम सहित गोटे कार्बन एटम तार इलेक्ट्रॉन गुडी को शेयर करबो लाइक मीथेन CH4 तले कार्बन हाइड्रोजन रहला चारिटा देखो हाइड्रोजन टा गोटे की प्रकार रे univalent माने यार वैलेंस इलेक्ट्रॉन होची 1 केतेटा हाइड्रोजन एटम सहित करियो ना गोटे यूनिवैलेंट एलिमेंट जदी चारिटा एटम थिबो ताले गोटे कार्बन एटम तार चारिटा इलेक्ट्रॉन को शेयर पेयर करतो केमि शेयर पेयर कर कार्बन रो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मु डॉट स्ट्रक्चर रे देखि सपोज हाइड्रोजन रो इलेक्ट्रॉन रो को देखाओ क्रॉस ताले ये हाइड्रोजन रो वैलेंस इलेक्ट्रॉन केते गोटे यार गोटे यार गोटे यार गोटे ताले चारिटा हाइड्रोजन रो चारिटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन अछि गोटे 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 हाई कार्बन रो निजर चारिटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन अछि ये कोन करे शेयर पेयर माने ये जहां को देथिबो ताठ भी आनिबो पूरा आनिबो नै कि दबो नै शेयर पेयर करके चलबे के कार्बन देखो ताले कार्बन रो हाइड्रोजन सहित कार्बन रो ये शेयर पेयर ये हाइड्रोजन ता कार्बन रो गोटे एटम आला ये डुप्लेट हेला डुप्लेट है कि हाइड्रोजन भी स्टेबल हैला कार्बन भी ये भी गोटे नहीं हैला ये कार्बन रो ये एटम ता ये हाइड्रोजन रो ये इलेक्ट्रॉन से शेयर पेयर कला कार्बन रो ये इलेक्ट्रॉन ता हाइड्रोजन रो ये इलेक्ट्रॉन से शेयर पेयर कार्बन रो ये इलेक्ट्रॉन ता ये हाइड्रोजन रो इलेक्ट्रॉन से शेयर पेयर तले कार्बन रो निजर चारिटा इलेक्ट्रॉन थिला एठी गोटे इलेक्ट्रॉन एठी गोटे ये जो शेयर करी पाइला 4 4 8 कार्बन हेला ना स्टेबल हाइड्रोजन गुडी का अनस्टेबल थिले गोटे गोटे वैलेंस इलेक्ट्रॉन थिला हाइड्रोजन तार नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन हीलियम सहित समान हवा के से गोटे इलेक्ट्रॉन पाइबा दरकार तले हाइड्रोजन स्टेबल हवा पाए तार डुप्लेट हिसाब रे हाइड्रोजन इन ऑर्डर टू attain stability of hydrogen so हाइड्रोजन शेयर कर देला हाइड्रोजन माने कोन हे गेले ना से माने स्टेबिलिटी हे गेले इलेक्ट्रॉन हला ने हाइड्रोजन माने डुप्लेट हेले से माने स्टेबल होंदी तर नियरेस्ट इनर्ट गैस होची के हीलियम और कार्बन रो नियरेस्ट नोबल गैस के रे कार्बन रो तो कार्बन रो
कहि परिबनी नियन नियन होची 10 10 हेले 2 8 ताले कार्बन जदि 8 टा इलेक्ट्रॉन कर दो आउटर मोस्ट 4 टा निजर अछि ताले एमानू 4 टा शेयर कर देला 4 टा हाइड्रोजन तो गोटे इलेक्ट्रॉन शेयर करि आनला ताले कार्बन केते हैला 2 4 थिला निजर 4 टा वैलेंस इलेक्ट्रॉन थिला आ 4 टा नै हैला 4 रे केते हैला 8 हैला 8 ही स्टेबल हे गेला ताले कार्बन जो बॉन्ड करूची केमित करछि लॉस करछि ना गेन करछि से लॉस करिने कि गेन करने खाली शेयर पेयर करछि शेयर पेयर करके बॉन्ड फॉर्मेशन कला ताले ये जो कार्बन कला यूनिवैलेंट एलिमेंट से यूनिवैलेंट माने जो एलिमेंट रो गोटे लेखा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ताले हाइड्रोजन केतटा सहित से करिवो गोटे कार्बन एटम रो 4 टा इलेक्ट्रॉन से 4 टा एटम सहित शेयर पेयर करिवो यदि कोन हेतु univalent element. Here univalent elements are hydrogen which contains electron. कार्बन डाइ 4 बार करी कार्बन डाइ गेला 4 इतना 4 एक 8 गेला वैलेंसी इलेक्ट्रॉन तो सिस्टम देला और हाइड्रोजन माने कार्बन रो गोटे गोटे नै कि सेमाने डुप्लेट है कि सेमाने भी स्टेबल है तले एठी कार्बन हाइड्रोजन भीतर बॉन्ड सब सिंगल बॉन्ड हला की बॉन्ड हला सिंगल बॉन्ड एठी कार्बन हाइड्रोजन सहित मिथेन रे कहला चारटा सिंगल बॉन्ड पाइले बुझले तापर आ गोटे केस देखिबा one carbon atom can share its 4 electrons. One carbon atoms can share its 4 electrons. गोटे कार्बन आटम नेचर जो 4 टा इलेक्ट्रॉन अछि से कहा को शेयर करिवो ना 4 इलेक्ट्रॉन्स with 2 atoms of bivalent element तने bivalent element के पले ऑक्सीजन गोटे bivalent ऑक्सीजन का वैलेंस शेल केते 2 माइनस लिखत नै ऑक्सीजन हला 2 6 तले ये ऑक्टेट हम आपन दीटा कोन करे मैग्नेटाइट तले 2 उच तार वैलेंस ऑक्सीजन हला गोटे bivalent तले केतटा ऑक्सीजन हो ना 2 एटम्स ऑफ bivalent एलिमेंट दीटा ऑक्सीजन एटम रो यार वैलेंस इलेक्ट्रॉन के तक सेम रो 6 टा तले यार भी 6 टा एठी गोटे कार्बन आटम एठी देखे गोटे कार्बन आटम रहला दीटा ऑक्सीजन रहला पहला वन कार्बन आटम कैन शेयर इट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स गोटे कार्बन आटम तार जो 4 टा इलेक्ट्रॉन रहला वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कहा से तो शेयर करिवो now with 2 atoms of bivalent element जो bivalent element जदि के थिबो तार दीटा एटम से तो गोटे कार्बन शेयर करबो बुझला देखो तले गोटे वन कार्बन एटम शेयर इट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स गोटे कार्बन एटम तार 4 टा जो इलेक्ट्रॉन अछि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कहा से तो शेयर करबो ना जो माने बाइवैलेंट एलिमेंट जदि हेतिबे से माने दीटा एटम थिले ताको से शेयर करबो तले गोटे बाइ 2 एटम्स ऑफ बाइवैलेंट एलिमेंट दीटा एटम रहला गोटे ऑक्सीजन ओ आ गोटे ओ दीटा एटम ऑफ ऑक्सीजन रहला आ ऑक्सीजन कोडी कहउछते बाइवैलेंट काई कहथिली ना ऑक्सीजन रो वैलेंस होची 2 सेता ऑक्सीजन को कहले बाइवैलेंट एलिमेंट रो दीटा एटम थिले गोटे कार्बन रो 4 टा एटम शेयर हो केमित हो देखथि ऑक्सीजन रो इलेक्ट्रॉन कोडी ऑक्सीजन आउटर मोस्ट है कितना इलेक्ट्रॉन रहे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ताले ऑक्सीजन रो 6 टा इलेक्ट्रॉन रहउची ये कोन करू यही कार्बन रो यही इलेक्ट्रॉन टा ये ऑक्सीजन रो या से शेयर कला ये या से शेयर कला देखो वर्तमान जो कार्बन निजर 4 टा को ये ऑक्सीजन रो दीटा और एपट ऑक्सीजन दीटा सहित शेयर करने ताले एठी समस्त ऑक्टेट होउचंदी नहीं देखे कार्बन रो निजर थिला 4 ये 2 6 ये 2 8 कार्बन हे गेला ऑक्टेट ऑक्सीजन रो निजर थिला 1 2 3 4 5 6 ये ऑक्सीजन भी कार्बन रो दीटा सहित कोन कला शेयर पेयर कला तले ये ऑक्सीजन रो केतरा 8 टा इलेक्ट्रॉन हे गेला
number of electrons is 8 in outermost shell. But in this oxygen, ये ऑक्सीजन कौन कला निजर आउटरमोस्ट 6 टा इलेक्ट्रॉन थिला ये आउ दीटा कार्बन इलेक्ट्रॉन सहित शेयर करा ये भी गेला आफ्टर तले कार्बन और ऑक्सीजन भितरे डबल बॉन्ड हला दीटा डबल बॉन्ड हला जदि if one carbon atom can share its 4 electron with 2 atoms of a bivalent element, then two double bond is formed. Next, if one carbon atom share its 4 electrons with one atom of bivalent element and two atoms of monovalent element or univalent element. Two atoms of univalent element. One carbon atom can share its 4 electrons. गोटे कार्बन आटम तार जो 4टा इलेक्ट्रॉन अछंती 4टा इलेक्ट्रॉन अछंती से केमिति शेयर करबो ना वन आटम ऑफ बाइवैलेंट एलिमेंट गोटे बाइवैलेंट एलिमेंट थिबा तार गोटे आटम आ यूनिवैलेंट एलिमेंट थिबा दीटा सहित शेयर करबो फॉर एग्जांपल सी देखो हाइड्रोजन दीटा रहला ऑक्सीजन गोटे रहला ऑक्सीजन गोटे हला वन एटम ऑफ बाइवैलेंट एलिमेंट ऑक्सीजन गोटे एटम रहला ये हला बाइवैलेंट एलिमेंट एंड टू एटम्स ऑफ यूनिवैलेंट दीटा एटम रहला हाइड्रोजन रे माने ले यूनिवैलेंट एलिमेंट तले एमान सहित ये केमिति शेयर पेयर करछि यार गोटे इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट यार भी गोटे किंतु यार होछि केतेटा 6टा इलेक्ट्रॉन ये 6टा अछि किंतु ये कार्बन ये यासित बॉन्ड कला ये इलेक्ट्रॉन यासित बॉन्ड कला ये कार्बन ये इलेक्ट्रॉन टा हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन सहित शेयर कला ये यासित शेयर कला तले एठी हम देखिले दीटा सिंगल बॉन्ड गोटे डबल बॉन्ड हला ओ केस रे ना जेतोले वन कार्बन एटम शेयर इट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स one atom of a bivalent element and 2 atoms of a univalent element then 2 single bond and 1 double bond is formed.